Hello students, welcome to the next video of a trigonometric equation. This is the fourth video of a trigonometric equation class. Before starting, first we start Brahmana. शांति 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 सुस्थ. Today we are going to discuss some problems of study material. Last class we are already discussed how to find general solution and principal solution of the problems of the study material and what are the trigonometrical standard formula. Okay, like that sin theta is equal to sin alpha, cos theta equal to cos alpha, tan theta equal to tan alpha, sin square theta is equal to sin square alpha, etc. Okay, now we do some problems of the study material. Question number 4. In question number 4, one question we do number 4.2. This is sec theta or sec x plus tan x is equal to root 3. Sec x plus tan x is equal to root 3. How to solve its general solution? So first we convert this given trigonometrical equation into standard form. So that is equal to sec x means we write this is 1 by cos x plus sin x by cos x equal to root 3. That implies 1 plus sin x by cos x equal to root 3. That implies 1 plus sin x is equal to root 3 cos x. And this is of the form root 3 cos x minus sin x is equal to 1. Okay, root 3 cos x minus sin x is equal to 1. And you know how to solve the trigonometrical equation of the form a sin x plus b cos x is equal to c. Here a is equal to minus 1 because the coefficient of a sin is minus 1 and the b is equal to root 3 and the c is equal to 1. Its solution is possible. C must be less than or equal to root of a square plus b square and greater than or equal to minus root of a square plus b square. जेहेतु ये सी रैल्यूटा 1 अच्छी आ 1 टा निश्चित रूपे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने कौन हम रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 4 माने 2 1 टा 2 सान हम ना नहीं. सो इट्स सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट एंड इट्स ट्रांसफॉर्म इक्वेशन यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ साइन और यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कॉस. तुम आपको साइन लिखिल हम कॉस लिखिल हम जेहेतु आम ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्यूशन बाहर करछे सॉल्यूशन पाई तुम सब कॉस लिखियो. तो कॉस लिखिले कौन लिखिया दिस इज आर इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा बिकॉज ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी इज ए साइन एक्स और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा और यू कैन राइट ऑल्सो आर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा. ओके कहीं एक्स अच्छी माने ये एक्स ना नहीं. अच्छा थीटा होची थीटा इफ वी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कॉस देन थीटा विल बी tan इनवर्स a by b. जदि तुम एटा को साइन लिखियो माने थीटा होची tan इनवर्स b by a. गत क्लास रे हमें कहैतला एटा ना नहीं a sin x plus b cos x is equal to r into cos of x minus theta or it can be also r into sin of x plus theta. So here r is equal to, so this is equal to 1 अच्छी नहीं. So root 3 cos x minus sin x is equal to 1. This is equal to r into cos of x minus theta. R is equal to root over a square plus b square 1 plus 3. This is root 4 is equal to 2 and theta is equal to tan inverse. Theta is equal to tan inverse a by b. So what is a? So this is equal to theta is equal to tan inverse a by b. So a which is minus 1
माइनस 1 ओके एंड बी हूँ √3 बी हूँ √3 तो tan इनवर्स माइनस 1 by √3 so this is equal to minus pi by 6 so this is equal to minus 30 degree you know minus 30 degree is equal to minus 1 by √3 okay then tan रो को वैल्यू minus 1 by √3 so this minus 30 degree कहीं थीटा रो वैल्यू को भीतर रखिया पड़ियो minus 90 to 90 भीतर रखिया पड़ियो so this is equal to r means what 2 into cos of x minus theta so theta means minus pi by 6 here minus or minus this is a plus pi by 6 is equal to 1 so that implies cos x plus pi by 6 is equal to cos of x plus pi by 6 is equal to that implies cos of x plus pi by 6 is equal to 1 by 2 because 2 into cos of x plus pi by 6 is equal to 1 नहीं तो cos of x plus pi by 6 is equal to 1 by 2 तो ये cos theta is equal to cos alpha style रहला so एटी कौन करिया पड़ियो ना this is equal to cos pi by 3 because cos 60 is equal to 1 by 2 तो cos theta is equal to cos alpha हला you know cos theta is equal to cos alpha its general solution theta is equal to 2n pi plus or minus alpha so x plus pi by 6 is equal to 2n pi plus or minus alpha means pi by 3 so x is equal to 2n pi plus or minus pi by 3 minus pi by 6 where n belongs to z set okay so this is the general solution of sec x plus tan x is equal to √3 तुम एटा प्रथमे sin cos रे कन्वर्ट करियो sin cos रे कन्वर्ट कला पर √3 cos x minus sin x equal to 1 रहला एटा a sin x plus b cos x फॉर्म रहला a sin x plus b cos x रो फॉर्मूला होची डायरेक्ट कन्वर्शन दा r into cos of x minus theta हो theta होची tan inverse a by b a होची -1 b होची √3 tan inverse -1 by √3 माने -30 डिग्री हो tan रो को वैल्यू -1 by √3 ना नहीं तो -90 to 90 भीतर रखिया पड़ियो तेनो एटा -30 डिग्री हला हला सो r माने 2 हला 2 into cos of x plus pi by 6 is equal to 1 किंतु 2 टा सेपरेट नबो 1 by 2 हले cos theta is equal to cos alpha स्टाइल लिखिलो ओके देन फार्मूला x is equal to 2n pi plus or minus alpha next okay so next we do another problem that is तो cos 2 theta equal to √2 plus 1 into cos theta minus 1 by √2 okay so how to solve first we convert into standard form that implies we write cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1 and we multiply this one so this is equal to √2 cos theta here √2 minus 1 by √2 so this is -1 plus cos theta and this is equal to -1 by √2 okay so this is equal to then again we multiply √2 so this is equal to here if we multiply this one so this is equal to √2 into √2 taking LCM or √2 okay so this is the 2 cos theta minus √2 plus √2 cos theta minus 1 so this is equal to 2 cos square theta minus 1 that implies 2 √2 so this is equal to 2 √2 cos square theta minus √2 so this is equal to 2 cos theta minus √2 plus √2 cos theta minus 1 so here minus √2 both are cancel okay so that will be 2 √2 cos square theta here minus 2 cos theta minus √2 cos theta
plus 1 is equal to 0. That implies 2 root 2 cos square theta minus 2 cos theta. Taking 2 cos theta common, so 2 cos theta means this is root 2 cos theta, here minus, okay, then taking minus, so root 2 cos theta minus 1 is equal to 0. That implies root 2 cos theta minus 1 into 2 cos theta minus 1 is equal to 0. So root 2 cos theta minus 1 equal to 0 means cos theta is equal to 1 by root 2 or cos theta is equal to 1 by 2. So cos theta is equal to 1 by root 2 means this is equal to cos pi by 4, or here cos theta is equal to 1 by 2 is equal to cos pi by 3. So cos theta is equal to cos alpha, you know general solution theta is equal to 2n pi plus or minus alpha, and this is also theta is equal to 2n pi plus or minus pi by 3 where n belongs to z set. Okay, so these are the general solution of cos 2 theta equal to root 2 plus 1 cos theta minus 1 by root 2. Okay, next we do another problem. Solve cos x to the power sin square x minus 3 by 2 sin x plus 1 by 2 is equal to 1 where cos x not equal to 0. Okay, since cos x not equal to 0 means we can express 1 is equal to cos x to the power 0. Okay, that implies cos x to the power sin square x minus 3 by 2 sin x plus 1 by 2. तेणु आपको फास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने जेहेतु cos x रो पावर अच्छी ये जो 1 अच्छी ताकू मध्य आम पावर स्टाइल रखा पड़ो ना ना कहीं दीटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आम इक्वेटिंग करा गले आर बेस को तार बेसटा सामान थिया दरकार आर पावर को तार पावर सामान थिया दरकार तेणु जो 1 अच्छी 1 बदल आम कौन लिखा cos x to the power 0. You know anything to the power 0 is equal to 1, a to the power 0 is equal to 1, a to the power 0 is equal to 1, but a not equal to 0. So like that 1 means we can express 1 is equal to cos x to the power 0 because cos x not equal to 0. So a the exponential function नहीं equal केतल होबो ना ना बेस को बेस इक्वल अछि तो पावर टा पावर संगे इक्वल होबो. That implies this is the sin square x minus 3 by 2 sin x plus 1 by 2 is equal to 0. तो आपको सिंप्लीफाई कले कौन होची ना दिस इज 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 is equal to 0. Okay, now factorize this one. Multiplication this is equal to 2 sin square x and addition will be minus 2 sin x 3 sin x. So this is equal to 2 sin square x minus 2 sin x then minus sin x plus 1 is equal to 0. Okay, so here take it common 2 sin x. So this will be sin x minus 1. Here also minus sin x minus 1 is equal to 0. That implies sin x minus 1 into 2 sin x minus 1 is equal to 0. That implies sin x is equal to 1 or sin x is equal to 1 by 2. So sin x is equal to 1 means this is equal to sin x is equal to 1 है. तो sin x is equal to 1 equal to कौन होगा sin pi by 2 और cos x is equal to 1 by 2 और sin x equal to 1 by 2. तो sin x equal to 1 by 2 is equal to sin 30 degree pi by 6 and use the formula sin x is equal to sin alpha. What is value of x? You know sin x equal to sin alpha means x equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. So this is n pi plus minus 1 to the power n into alpha. Okay, do you understand? Or here x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha means here pi by 6. So where n belongs to z set. So these are the general solution of cos x to the power sin square x minus 3 by 2 sin x plus 1 by 2 is equal to 0. Next we do another problem also, that is equal to cos x 7 number. Cos x plus cos 3x plus cos 5x
plus cos 7x is equal to 0. So here how to solve? Use the CD formula. Okay. So by using CD formula to get a required solution, देखो एडी हमें कौन करिया पड़ियो ना cos x plus cos 3x अच्छी cos 5x plus cos 7x अच्छी हमें कौन करिया cos x plus cos 7x ए दिरा पे हमें CD formula पकेबा और cos 3x cos 5x पे ए दिरा पे हमें CD formula use करिया. So first we write in using the CD formula form, that is equal to cos 7x plus cos x. Okay, we take it bracket plus cos 5x plus cos 3x is equal to 0. So taking these two term in bracket and taking the in two term in also bracket. Okay, then use the cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, 7x plus x, 8x by 2, 4x into cos 7x minus x, so 6x by 2, this is equal to 3x. Here 2 cos 5x plus 3x, this is 8x by 2 means 4x into cos 5x minus 3x, 2x by 2, so this is equal to x is equal to 0. So 2 cos 4x take it common. एडी आम कौन करिया 2 cos 4x टा कॉमन नहीं जो, सो दिस इज cos 3x plus cos x is equal to 0. Then here again use the also formula, CD formula, cos 3x plus cos x, so this is equal to 2 cos 4x into 2 cos c plus d by 2, 3x plus x, 4x by 2 कौन हम 2x हम into cos 3x minus x, 2x by 2x is equal to 0. Okay, so here 2 into 2 4 cos 4x into cos 2x into cos x is equal to 0. So cos 4x is equal to 0 or cos 2x is equal to 0, that implies cos 4x is equal to 0 or cos 2x is equal to 0 or cos x is equal to 0. So cos 4x is equal to 0 means x is equal to 4x is equal to, you know, cos x is equal to 0 means x is equal to odd multiple of 90, that is the 2n plus 1 into pi by 2. So cos 4x is equal to 0 means 4x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, or cos 2x is equal to 0 means 2x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, or cos x is equal to 0 means x is equal to 2n plus 1 into pi by 2. Okay, for all n belongs to z set, that is x is equal to 2n plus 1 into pi by 8 or 2n plus 1 into pi by 4 or 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to z set. So this is the required solution of the trigonometrical equation cos x plus cos 3x plus cos 5x plus cos 7x is equal to 0. Okay, next 81 to the power sin square theta plus 81 to the power cos square theta is equal to 30. How to solve its general solution? Here one is a sin square theta and other is a cos square theta. So first you have to convert in the same trigonometric ratio. Either तुम sin टाक cos रे convert करो कि cos टाक sin रे convert करो, जोड़ाले गोटे रे convert करिया पड़ियो ना नहीं. That implies 81 to the power sin square theta plus 81 cos square theta हम कौन लिख लिए, this is 1 minus sin square theta is equal to 30. So here 81 to the power sin square theta plus 81 by 81 to the power sin square theta is equal to 30, and this is equal to 81 to the power sin square theta whole square plus 81 is equal to 30 into, this is equal to 31 into 81 to the power sin square theta. Okay, and 81 to the power sin square theta, so 81 to the power sin square theta means this is equal to 81 to the power 2 sin square theta minus 30
into 81 minus 30 into 81 to the power sine square theta plus 81 is equal to 0. Okay. Now 81 to the power sine square theta, put 81 to the power sine square theta is equal to x. Suppose we take it x and this is equal to 81 to the power sine square theta means x. So this is equal to x square minus 30x plus 81 is equal to 0. Okay. Plus 81 is equal to 0. Now solve it. So here minus 27. So x square minus 27x minus 3x. Because 27 3 is 81. So this is 81 to the power x square minus 81 is equal to 0. आपको हमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर देली तो minus 30x means we have to express minus 27x minus 3x, because if we multiply minus 27x and minus 3x, this will be 81 x square, and if we add these two terms, then this is a minus 30x. Okay. So here take it common x. So this is equal to x minus 27 minus 3 common. So this is x minus 27 is equal to 0. That implies x minus 27 into x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 27 or x is equal to 3. But what is x? देखो x माने कौन, 81 to the power sin square theta. तो x डायरेक्ट पकड़ दियो 81 to the power sin square theta is equal to 27 और 81 to the power sin square theta is equal to 3. बुझी होची ना MD. So 81 to the power sin square theta means this is equal to 3 to the power 4 to power sin square theta is equal to 3 to cube. Here 81 to the power sin square theta means this is also 3 to the power 4. 3 to the power 4 sin square theta is equal to 3. That implies 4 sin square theta equal to 3 here, or 4 sin square theta, 4 sin square theta, this is equal to 3 means 3 to the power 1 hala na nahi. So it is 1 achi, so this is 1. That implies sin square theta is equal to 3 by 4 hala. Here sin square theta is equal to 1 by 4 hala. अच्छा sin square theta 3 by 4 हेले तो sin square theta is equal to 3 by 4. Here sin square theta is there. देखो एडी जेहेतु एपटे sin square theta अछि तमे 3 by 4 टा कोन करियो स्क्वायर फॉर्म लिखिया पड़ियो. तो स्क्वायर फॉर्म लिखले कोन हो, दिस इज रूट 3 by 2 रो स्क्वायर हैला. हियर दिस इज sin square theta इक्वल टू केता हो 1 by 2 रो स्क्वायर हैला. ओके, देन यू एक्सप्रेस sin square theta is equal to sin square alpha. sin square alpha रो वैल्यू को भीतर minus 90 to 90 भीतर रखिया पड़ियो. तो sin रो को वैल्यू रूट 3 by 2, क्लियरली इट इज 60 डिग्री. So sin square theta is equal to root 3 by 2 means this is equal to sin square theta is equal to sin square 60 degree, that is pi by 3. So this is equal to sin square theta is equal to sin square pi by 3, because sin 60 pi by 3 is equal to 60 degree. Okay, and this is equal to sin square pi by 3. Next, or sin square theta is equal to 1 by 2. 1 by 2 means sin 30 degree. Sin 30 equal to 1 by 2. So this is equal to sin square pi by 6. That implies theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha pi by 3. Here theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. So alpha means this is a pi by 6 where n belongs to z set. Okay, so this is the general solution of 81 to the power sin square theta plus 81 to the power cos square theta is equal to 30. Then we get another equation. This is the sin 4th x plus cos 4th x is equal to sin x plus cos x. So how to prove or how to find its general solution? That is a 9 number.
sin 4th x plus cos 4th x is equal to sin x into cos x. Okay. So here what we do, first sin 4th x means you have to write sin square x square and cos 4th x means cos square x square. आपको कौन करिया पड़े स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करियो. तो स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करिया हेले तुमको कौन करियार अछि फॉर्मूला अप्लाई करो sin square x स्क्वायर करियो एडी cos square x स्क्वायर करो. सो दिस इज इक्वल टू sin square x स्क्वायर है प्लस कौन होची cos square x स्क्वायर है इक्वल टू और माइनस नहीं जाओ. सो दिस इज माइनस ऑफ sin x into cos x is equal to 0. देखो एने आ तुमको जमदी हेले गोटे स्टैंडर्ड फॉर्म आनिया पड़ो. स्टैंडर्ड फॉर्म आनिया को तुमको सिंपलीफाई करिया पड़ो. तो सिंपलीफाई केमदी हम फॉर्मूला अप्लाई करियो फॉर्मूला यूज कले तो सिंपलीफाई हम. अच्छा ये कौन पकड़ो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला कौन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. सो दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए मीन्स sin स्क्वायर x b मीन्स cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 0. ओके आर यू अंडरस्टैंड. तो यू नो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है. तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 0. तो बुझेला ना नहीं. अच्छा ये माइनस टी कॉमन नहीं जो. सो माइनस टी कॉमन ले कौन होची ना दिस इज 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस sin x इंटू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो या फैक्टराइजेशन कर दियो. सो दिस इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके कहीं ना ए दिरा को जब आम एड करिया बोले sin x cos x आसला और ए दिरा को मल्टीप्लाई कले माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x एटा गोटे क्वाड्रेटिक फॉर्म रहा ना क्वाड्रेटिक फॉर्म रहा. तो क्वाड्रेटिक फॉर्म रही तुम कौन कर ताको एइदर फैक्टराइजेशन करि पारियो बा मिडिल टर्म स्प्लिट करि पारियो. सो ये कौन करिया हमें 2 sin x cos x टा कॉमन नहीं जाओ. तो 2 sin x cos x टा कॉमन नेले ये कौन आसला sin x इंटू cos x आसला प्लस 1 आइला. ये माइनस टी कॉमन कले sin x इंटू cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ना नहीं. फिर sin x cos x प्लस 1 कॉमन नहीं जाओ. सो दिस इज इक्वल टू sin x इंटू cos x प्लस 1 कॉमन ले कौन हम 2 sin x इंटू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है लगे. अच्छा तो दिस इज इक्वल टू sin x प्लस sin x इंटू cos x प्लस 1 इंटू 2 sin x प्लस 2 sin x इंटू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ को आम कौन करिया दैट इम्प्लाइज sin x इंटू cos x इज इक्वल टू गोटे माइनस 1 आइला आ गोटे कौन हम 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1 आइला. ओके सो दिस इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x 1 और sin x इंटू cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ है. ये आम कौन करिया ये माइनस 2 मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई कर दी 2 मल्टीप्लाई कर दी दैट इम्प्लाइज 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू माइनस 2 गोटे और here 2 sin x into cos x in you know this is sin 2x. Okay so this sin 2x is equal to what 1 हला. अच्छा हेले एडी कोन देखो 2 sin 2 मल्टीप्लाई करले ना कहीं sin x into cos x अछि हमें 2 मल्टीप्लाई करले बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई करिया द्वारा कोन होला 2 sin x into cos x is equal to कोन होला sin 2x. तो sin 2x is equal to -2 but sin 2x is equal to -2 this is never possible because you know whatever may be the value of x sin 2x रो कि sin 3x रो its maximum value is +1 and minimum value is -1. all value of a sin in lies between close interval -1 to +1 lies in between -1 to 1. એટલે -2 टा कोन होची -1 टू सामना हे होची -1 टू सामना ले sin ऑफ वेला एग्जिस्ट होबो नै. तो sin 2x is equal to -2 this is impossible. This is impossible to find the value of x. How कौन आसला ना sin 2x is equal to 1 आइला. तो sin 2x equal to 1 means this is equal to sin pi by 2. तो sin theta is equal to sin alpha आला. So 2x is equal to n pi plus -1 to pi into alpha.
तो x इज इक्वल टू कौन होची ना 2n, सो दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 टू n इंटू पाई बाई 2 बाई 4 है आम ये 2 एलसीएम करदे 2n पाई प्लस माइनस 1 टू n इंटू पाई बाई 4 where n belongs to z set, where n belongs to z set, and this is the required solution of sin 4th x plus cos 4th x is equal to sin x into cos x. Okay, तेणु सब गोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को तुम स्टैंडर्ड फॉर्म आनिया पड़ो, स्टैंडर्ड फॉर्म आनला तुम फॉर्मूला पकड़ कर जो पर्यंत स्टैंडर्ड फॉर्मूला आसनी से पर्यंत तुम सिंप्लीफाई करिया पड़ो. ओके, next solve cos 3x minus cos 2x is equal to sin 3x. Here how to solve? This is not a standard form, नहीं एटा स्टैंडर्ड फॉर्म ना तक हम स्टैंडर्ड फॉर्म आनिया पड़ो. सो ये कौन करिया, ये cos 3x अच्छी cos 2x अच्छी sin 3x अच्छी कौन करिया कहलो, what we do? So we apply the formula sin 3x formula, cos 2x formula and sin 3x formula. So answer, you know cos 3x. What is cos 3x? What is cos 3x? So cos 3x is 4 cos qx minus 3 cos x. Cos 2x cos square x minus sin square x. और sin 3x होची कौन 3 sin x minus 4 sin qx. तो तुम ये cos 3x र फॉर्मूला पको, cos 2x र फॉर्मूला पके दियो, sin 3x र फॉर्मूला पके दियो. So this is equal to 4 cos qx minus 3 cos x. माइनस cos 2x रे कौन करियो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू sin 3x रे 3 sin x minus 4 sin qx. Okay, now simplify this one, that implies 4 cos qx एपटे कौन अच्छी minus 4 cos q minus 4 sin qx अच्छे एपटे गिनानो plus 4 sin qx रखो, एटा minus 3 cos x अच्छी माइनस 3 cos x एप्ट वाला माइनस 3 sin x वाला सब जाक लेफ्ट आनो. हाँ, ये माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. डू यू अंडरस्टैंड? मो कौन कली कहलो 4 cos q x रखिली माइनस 4 sin q x टाको 4 sin q एप्ट आनली माइनस 3 cos x माइनस 3 sin x, here cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. सो ये टेक इट कॉमन 4 cos q x प्लस sin q x रहला ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला पके दियो. तो दिस इज cos x प्लस sin x ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यू नो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. 4टा कॉमन कले cos q x प्लस sin q x है, cos q x प्लस sin q x फॉर्मूला पका है. ये कौन अच्छी 4टा रहा या 4टा आमर अच्छी ना नहीं, ये माइनस 3 अच्छी माइनस 3टा कॉमन नहीं जो. तो दिस इज इक्वल टू cos x प्लस sin x है, cos x प्लस sin x है ना. ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x फॉर्मूला पके दियो cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x. सो दिस इज माइनस ओके cos x प्लस sin x इंटू cos x minus sin x is equal to 0. Are you understand? देखो, I hope that all are well understand. तो ये cos x plus sin x अच्छी, ये cos x plus sin x अच्छी, ये cos x plus sin x अच्छी. तो first we take cos x plus sin x in each term. प्रत्येक term रो cos x plus sin x टा में common नेबा. तो cos x plus sin x टा common ले ये कौन रहा दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एटा रहा पड़ेगा एटा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 है. तो 4 इंटू है 4 इंटू कौन हो 1 माइनस cos x इंटू sin x है. कहीं फास्ट टर्म जब आम cos x प्लस sin x कमन कले 4 एटा cos स्क्वायर प्लस sin 1 माइनस एति रहा माइनस कौन हम 3 हम ये कौन हम cos x प्लस sin x टा पड़ी आ रहा के माइनस cos x माइनस टा मल्टीप्लाई कले माइनस cos x प्लस sin x है. बुझे ना नहीं? देखो cos x प्लस sin x टा कॉमन नली 4 1 माइनस cos x sin x माइनस 3 है माइनस टी मल्टीप्लाई कले माइनस cos माइनस टा मल्टीप्लाई कले कौन होची माइनस cos x प्लस sin x है. सो दिस इज इक्वल टू हियर cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0.
this is 0, that implies cos x plus sin x is equal to 0 hala, or here we multiply, this is equal to 4 minus 4 cos x into sin x minus 3 and minus cos x plus sin x is equal to 0. So cos x minus sin x is equal to 0 means this is equal to sin x equal to kete hala minus cos x hala. Here कौन होती 4 minus 3 this is 1 hala, तो minus 4 cos x into sin x और अगर 1 रहा 4 minus 3 1 minus 4 cos x sin x hala plus sin x minus cos x is equal to 0 hala. अच्छा ये कौन होती ना tan x hala, tan x is equal to minus 1 hala, और 1 minus 4 cos x into sin x plus sin x minus cos x is equal to 0 hala. अच्छा tan x is equal to minus 1 माने कौन लिखिया मैं tan x is equal to minus 1 is equal to tan आप क्या था minus pi by 4, तो tan x is equal to minus 1 is equal to tan of minus pi by 4, that implies x is equal to कौन हो बेटा n pi plus alpha, तो minus pi by 4 है n belongs to z है तो यार सॉल्यूशन गोटे पळे आसिला. बर्तमान कौन करिया पड़ो हाउ टू सॉल्व 1 minus 4 cos x ए जो रहिला 1 minus 4 cos x into sin x plus sin x minus cos x is equal to 0. एडा केमदी सॉल्व करिया देखो पहिले, दिस इज इंपोर्टेंट नहीं कि सो दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बट हाउ टू मेक इट स्टैंडर्ड फॉर्म. फर्स्ट यू हैव टू टेक पुट sin x minus cos x is equal to हमें कौन नेबा दिस इज t नहीं होची मु कौन ले लेटे दिस इज इक्वल t हेले t ने लेडी कौन हबो ना cos x into या जगह हमें t पकेबा किंतु cos x sin x रे कौन पकेबा. अच्छा t जदी नेबा t स्क्वायर टा कौन हबो sin x minus cos x होल स्क्वायर हबो ना, हेले sin x minus cos x होल स्क्वायर मींस sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x minus 2 sin x into cos x, तो दिस इज 1 minus 2 into sin x into cos x t स्क्वायर टा काहे sin x minus cos होल स्क्वायर गले a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2ab sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर 1 नहिला. सो दिस इज इक्वल टू 2 sin x into cos x कौन होबो 2 sin x into cos x is equal to 1 minus t स्क्वायर 1 minus t स्क्वायर. सो 1 minus तो कौन होला कहलो, सो 1 minus 4 cos x. So see that carefully. So 1 minus 4 sin x into cos x plus sin x minus cos x is equal to 0 है ना, that implies ये कहते होची 1 minus 4 into sin x into cos x टा कहता हो. अच्छा 4 into 2 sin x into cos x जारे कौन पड़ियो 1 minus t स्क्वायर एट 4 अच्छे माने कौन 2 into एति हो ना, दिस इज इक्वल टू 2 into एति 2 into 2 sin x into cos x, बट 2 sin x into cos x 1 minus t स्क्वायर टा रिप्लेस करनो, सो दिस इज इक्वल टू 1 minus t स्क्वायर. डू यू अंडरस्टैंड 4 टा हमें कौन लिखले 2 into 2 sin x into cos x 2 रोइला 2 sin x into cos x 1 minus t स्क्वायर पकेली हला. अच्छा प्लस ये कहता t इज इक्वल टू 0 हला, दैट इंप्लाइज रे मल्टीप्लाई करले 1 minus 2 plus 2t square 1 minus 2 plus 2t square plus t is equal to 0 है. अच्छा 2t square plus t minus 1 is equal to 0. तो आपको कौन करियो तुम फैक्टराइजेशन कर दियो प्लस t है ना, तो याको फैक्टराइजेशन करले कौन होची ना दिस इज इक्वल टू 2t square plus 2t minus t, चाहिए 2t minus t है t मल्टीप्लाई करले केते होची minus 2t square, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है. अच्छा 2t टा कॉमन है कौन होची ना दिस इज t plus 1 एडी माइनस t कॉमन है t plus 1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वल टू t plus 1, ये t plus 1 into 2t minus 1 is equal to 0, that implies t is equal to minus 1 गुटाइला आउट t टा कौन होची ना 1/2 आसेला. So what is t? तो t होची कौन ना एक्चुअली sin x minus cos x. So t means this is equal to sin x minus cos x is equal to minus 1 गुटे
-1 गोटे आउ गोटे और sin x minus cos x is equal to 1/2, which is of the form a sin x plus b cos x. You know a sin x plus b cos x is equal to r into sin of x minus theta. हेले r रेडी कौन हम r टा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r टा r माने कौन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a बोले 1 b बोले -1 ना ये r टा होची √2 थीटा कौन हम आ पाई थीटा कौन हम थीटा होची तमरो एडी r टा होची √2 हला थीटा होची tan इनवर्स a by b a माने कौन sin रो कोएफिशिएंट हम सब a नोचे cos रो कोएफिशिएंट b नोचे तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a माने 1 b माने -1 है सो tan इनवर्स -1 है tan इनवर्स -1 माने कौन tan इनवर्स -1 tan रो को वैल्यू -1 -π/4 सो दिस इज इक्वल टू -π/4 3π/4 लिखियो नि काई -90 to 90 भीतर आगर तुमको कहै छी अच्छा सो ए इक्वेशन ना कौन हला ना दिस इज r into sin of x minus theta सॉरी r into cos लिखिया ना तो दिस इज r into cos of x minus theta is equal to c टा के तो अछि -1 एड भी हम लिखि पारिया या पाई किंतु या पाई r टा होची √2 थीटा भी सही नहीं से sin x minus cos x एड भी sin x minus cos x अछि सो एड भी हम लिखि पारिया दिस इज r into cos of x minus theta is equal to 1/2 वर्तमान एक्सप्रेस कर दियो सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज r सो r is equal to √2 that implies √2 into cos x minus theta x माने डी x अछि थीटा माने कोन हो -π/4 थीटा माने -π/4 ये माइनस माइनस प्लस हला x plus π/4 is equal to कोन होची -1 हला एडी कोन हला √2 into cos of x plus π/4 is equal to -1/2 sorry 1/2 हला ओके अच्छा that implies cos x plus π/4 is equal to -1/√2 हला cos एटा को फार्मूला cos x is equal to cos alpha cos theta is equal to cos alpha तो एडी कोन लिखिया -1/√2 हम कोन लिखिया दिस इज द cos 3π/4 135 डिग्री तो cos theta is equal to cos alpha हला that implies x plus π/4 is equal to 2n pi plus or minus alpha 2n pi plus or minus 3π/4 n belongs to z set काहे cos theta is equal to cos alpha लिखुछु सेही alpha रो वैल्यू 0 to 180 भीतर रहइबो ना 135 डिग्री माने 0 to 180 भीतर अछि तो एडी x plus π/4 is equal to गाइला एडी कोन लिखा हबो दिस इज इक्वल टू एटा 1/2 अछि नै गे सो दिस इज इक्वल टू r हमर केते अछि √2 सो दिस इज इक्वल टू 1/2 √2 into so this is equal to so here x plus π/4 is equal to 2n pi plus or minus 3π/4 okay then √2 cos x plus π/4 is equal to 1/2 हला so यार सॉल्यूशन कोन हो cos x plus π/4 is equal to 1/2 √2 हला cos x plus π/4 is equal to 1/2 √2 means here we also express cos theta is equal to cos alpha 8 जिंद रहला तमरा -1/√2 रहला तो कौन लिखिलो दिस इज cos 3π/4 काहेकि cos 3π/4 टा होची तमरो -1 नबो सॉरी -1/cos 3π/4 is equal -1/√2 तो एट देखिया पड़ियो cos x plus π/4 equal to 1/2 रूट अछि नै कि तो cos रो को वैल्यू 1/2 रूट आसियो cos रो को वैल्यू 1/2 रूट आसियो मींस देखो दिस इज नॉट स्पेशल एंगल 0 to 180 भीतर है आम कहि परियानी जे x रो को वैल्यू पाई नै कि को एंगल दा तार cos वैल्यू पाई केता हो 1/2 √2 so it is difficult to define the value of theta whose cos value is equal to 1/2 √2 suppose we express this is equal to cos beta or this is equal to cos alpha where cos alpha is equal to 1/2 √2 suppose we take an angle alpha
where alpha lies in between 0 to 180 degree, जे cos alpha is equal to 1 by 2 root 2. Take it, suppose, since we cannot the value of theta determine, we cannot determine the value of theta, where cos theta is equal to 1 by 2 root 2. जेहेतु थीटार को भैल्यू cos भैल्यूटा 1 by 2 root 2 हम आम ये डायरेक्टली कहीपर ना, सो वी टेक cos alpha is equal to 1 by 2 root 2. ओके, cos alpha is equal to 1 by 2 root 2 हेले alpha कौन हम ना, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 by 2 root 2. जदि आम एंगेलटा cos इनवर्स 1 by 2 root 2 नेबा, तार cos वैल्यू नेले 1 by 2 root 2 आसीयो, कहीं इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इज एन एंगल, साइन इनवर्स को कि tan इनवर्स को कि cos इनवर्स को सब जगह गोटे गोटे एंगल हम आम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा. दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिलोंग्स टू इन सेकेंड इयर कोर्स. जेहेतु ये सेकेंड इयर कोर्स अच्छे आम से पढ़ा डिटेल जे प्रत्येक इनवर्स गोटे गोटे एंगेलटा, जेहेतु ये 1 by 2 root cos रो को वैल्यू केते होबा हमें डिटरमाइन करियाटा डिफिकल्ट होबो. सो वी डेफिनेटली वी से cos इनवर्स 1 by 2 root 2 is an angle whose cos value is 1 by 2 root 2. So this is equal to, suppose cos x plus pi by 4 is equal to cos beta or cos alpha, say cos alpha, say where alpha is equal to, where alpha is equal to, that is the cos alpha is equal to 1 by 2 root 2. What is alpha? So alpha is equal to cos inverse 1 by 2 root 2. So cos theta is equal to cos alpha, means theta is equal to 2n pi plus or minus alpha. So x plus pi by 4 is equal to 2n pi plus or minus alpha. So alpha means what? Cos inverse 1 by 2 root 2. Okay, where n belongs to that set. So clearly these are all are the solution. One solution is x plus pi by 4 equal to n pi plus or minus cos inverse 1 by 2 root 2, and one is x plus pi by 4 is equal to n pi plus or minus 3 pi by 4, and one is x is equal to n pi minus pi by 4. So these are all are the solution of the trigonometrical equation cos 3x minus cos 2x is equal to sin 3x. Okay, these are all are the solution. एड़ा पूरा बड़ो क्वेश्चन ना नहीं. अच्छा, next we do fill in the blanks. Similar very short type question. Number 1 question, fill in the blanks. Tan of cot x is equal to cot of tan x, then sin 2x is equal to dash. So if tan of cot x is equal to cot of tan x, then what will be sin 2x? देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छी कि tan of cot x अच्छी cot of tan x अच्छी. तो you know the standard form of trigonometrical equation, tan theta is equal to tan alpha or cot theta is equal to cot alpha. either दीटा को tan रे कन्वर्ट करियो किंबा दीटा को cot रे कन्वर्ट करिया पड़ियो. आंसर tan of cot x equal to cot of tan x means you have to write tan of pi by 2. देखो एटा होचे cot theta हला, तो cot theta means कौन हो, tan of 90 minus theta, theta means tan x हला. तो tan 90 minus tan x means this will be cot of tan x हला. So tan theta is equal to tan alpha, which is of the form tan theta equal to tan alpha. You know theta is equal to n pi plus alpha. So cot x is equal to okay n pi plus alpha. Alpha माने कितने, pi by 2 minus tan x हला. Okay, that implies cot x plus tan x is equal to ये केते होची n pi plus pi by 2 हला. किंतु पचार हम कोन sin 2x ता पचार छी. अच्छा, cot x ता कोन करिया हमें, तो cot x is equal to 1 by tan x कर दियो, 1 by tan x कर दे, 1 by tan x, or you can take it sin by cos. This is equal to tan x means this is equal to cos x by sin x plus sin x by cos x equal to this is 2n pi plus pi by 2 है. So this is equal to cos square x plus sin square x. Yes, you cos square x plus sin square x by sin x into cos x is equal to 2n plus 1 into pi by 2.
ओके देन cos square x plus sin square x is equal to 1 है 1 by sin x into cos x ଅଛି sin x into cos x 82 मल्टीप्लाई करते 82 मल्टीप्लाई करते इक्वल टू केते होची 2n plus 1 into केते pi by 2 है that implies 2 by ये केते होची sin 2x है तो sin 2x is equal to 2n plus 1 into केते है pi by 2 है हम कौन पचारछि sin 2x टा पचारछि ना कि अच्छा that implies 1 by sin 2x is equal to जो 2 by sin 2x अच्छी 1 by sin 2x मुझे आनी तो ये सेपट नहीं जो तो ये गले डिवाइड हम ना कि सो दिस इज इक्वल टू 2n plus 1 into कौन होची pi by 4 है तो 1 by sin 2x is equal to this one that implies sin 2x is equal to 4 by pi into 2n plus 1 where n belongs to z set तो sin 2x is equal to 4 by pi into 2n plus 1 okay. Next you do another problem number 2. This is the solution of 10x plus cot x. 10x plus cot x is equal to 2. What is its solution? Okay. तो कौन करा बड़ी 10 now sin cos convert कर दियो as usual process रे. So this is equal to 10x means this is the sin x plus cos x. एडा अब cos x by sin x is equal to 2. So this is equal to sin square x plus cos square x 1 है तो 1 by sin x into cos x is equal to 2 बर्तमान 2 मल्टीप्लाई कर दियो तो 2 by कौन होती sin 2x है 2 by sin 2x is equal to 2 नहीं कि that implies sin 2x is equal to 1 है so sin 2x is equal to 1 means this is the sin pi by 2 है एडा cos square x plus sin square x 1 है 1 by sin x into cos x है मु कौन करी 2 मल्टीप्लाई कली 2 डिवाइड कली तो 2 by sin 2x is equal to 2 है तो 2 2 कैंसिल है sin 2x टा 1 है तो 2 sin 2x is equal to sin pi by 2 that means 2x is equal to n pi plus minus 1 to n into alpha alpha means pi by 2 so here x is equal to therefore so this is equal to 2x is equal to okay so 2x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into pi by 2 this is the solution. This is the solution. Okay, but here 2x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into pi by 2. But there is no option. Here option is equal to 1 is n pi plus pi by 4, other is n pi minus pi by 4, other is n pi minus pi. So this since here option is not there, so we express in another way. So this is equal to 1 by here we change this equation. Okay, here we change this expression that is 1 by sin x into cos x is equal to 2. That implies what? 1 is equal to 2 sin x into cos x. Okay, that implies 2 sin x or 1 minus 2 sin x into cos x is equal to 0. You know 1 minus 2 sin x into cos x is equal to 0 equal to this is equal to 1 means you have to write sin square x plus cos square x minus 2 sin x into cos x is equal to 0. That implies sin x minus cos x or whole square is equal to 0. Here a square plus b square minus 2ab. So we change the expression in this way because there is no option. Okay. So that implies sin x minus cos x is equal to 0. That implies sin x equal to cos x तो sin x is equal to cos x. Okay, so sin x is equal to cos x means that implies tan x is equal to 1. तो tan x is equal to 1 is equal to tan what? Pi by 4. तो tan x equal to tan pi by 4 means what is x? So x is equal to n pi plus alpha pi by 4. But here option is that here on option is there 1 is n pi plus pi by 4, n pi minus pi by 4. And n pi by 4 so here n belongs to z set. So tan x plus cot x is equal to 2. Its solution is x is equal to n pi plus pi by 4. Or you can write in the previous expression also that is x is 2x is equal to 2x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into pi by 2. This is also correct. But here option is not there. So we arrange this solution
इन टर्म ऑफ ऑप्शन तेणु ऑप्शन जेतु नहीं आम सी ऑप्शन स्टाइल आम कन्वर्ट कले किंतु खाली जदि जेनरल सॉल्यूशन पचार था बोले तुम्हें से भाया तुम्हें कर सो यू कैन ट्राई ऑल द प्रॉब्लम इन द multiple choice question. If you have a doubt then you may ask me in a Google Meet class. Okay, so you can do all the problems of the study materials or chapter trigonometric textbook. In textbook also trigonometric equation exercise is there, you can do this problem also. Okay, so if you have a doubt then you ask me in the Google Meet class. Thank you.